Okay, good evening, everybody. In our yesterday's lecture, we completed the chapter called as demand analysis, and we were discussing elasticity of demand, but we witnessed some technical drawbacks, screen sharing and sound sharing mein. Thus, we cancelled the lecture, and today we would continue with the same concept. I would be describing the concept called as elasticity of demand today. Elasticity of demand. We would be describing that. See, dear friends, we have studied one chapter called as demand. And that demand chapter, we studied. It explains us the relationship between price of the product and quantity demanded of the product. Price and quantity demanded का रिलेशनशिप अपने को एक्सप्लेन करता था. ये लॉ अपने को बताता था. इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड डिमांड. वी स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड विच सेड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा. प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स. At the same time, price falls, demand rises. It explains us that there exists inverse relationship between price and quantity demanded. But the law fails to explain how much. The law does not explain how much. Just spare me a minute. I'm unable to log in through the other instrument. आप कुछ डाउट पूछोगे तो मुझको नहीं पता चलेगा. The law does not explain how much. Law explains price बढ़ेगा तो demand बढ़ेगा, but it does not explain how much. मतलब कितना demand बढ़ेगा. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, मगर कितना. या फिर प्राइस कम होगा तो डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, मगर कितना. द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन. It just only explains that price rises, demand falls, and price falls, demand rises, but it does not explain how much. So this explanation to us is given by elasticity of demand, that how much. Elasticity of demand means
degree of responsiveness of demand to a given change in price. मतलब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा, डिमांड का कितना रेस्पॉन्स रहेगा. अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से प्राइस राइजेस बाय 10%, प्राइस राइजेस बाय 10%, तो डिमांड क्या होना चाहिए बताओ मुझको. Now as there is rise in price, what should be the reaction of the demand? Demand will fall. प्राइस राइज हो गया बाय 10%, से डिमांड फॉल बाय 20%. Demand falls by 20%. Can I say demand has responded 2 times of the price? In this example, can I say demand has responded 2 times of the price? So that 2 times is called elasticity. That 2 times in economics will be called as elasticity. Is that clear to all of you? The response what it is giving is called elasticity. देखो, as far as the formula to calculate elasticity of demand is concerned, I would say ED is equal to, technically, it is said that elasticity of demand, E, elasticity, and D is demand. So you have to read it as elasticity of demand. You will read it as elasticity of demand. Elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. अभी आप जब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत स्पेसिफिकली पता रहना चाहिए कि जब हम परसेंटेज चेंज फाइंड करने वाले हैं तो इट इज इक्वल टू change in demand upon original demand divided by change in price upon original price. This is how we can calculate the percentage change. Now, technically, in economics, when we consider the word change, ये change ये word जब हम consider करते हैं, this change is represented by the sign called as delta. It would be represented by the sign called as delta. So is equal to delta D, that is change in demand, upon D, that will be original demand, divided by delta P upon P. Delta P upon P. अभी इसको मल्टीप्लीकेशन में मैं कन्वर्ट करता हूं, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, P अपॉन डेल्टा P. तो थोड़ा और इसको मॉडिफाई, इसको देखेंगे तो elasticity of demand is equal to change in demand upon original demand multiplied by original price upon change in price. Is this formula clear to all of you? Let us say we take up one example. Original value, हम एक प्रोडक्ट लेते हैं लिम्का 200 ml.
ओरिजिनल प्राइस उसका था 7 रुपीज, जहां पे 500 बॉटल्स ऑफ लिम्का वॉज डिमांडेड. नाउ द प्राइस बिकेम 9. प्राइस बढ़ गया तो डेफिनेटली डिमांड तो कम होने वाला है, तो डिमांड फॉल डाउन टू 300 bottles. Take another example. Laptop price was 40,000, demand was 10 units. 35,000 12 units. तो ये सब लॉ ऑफ डिमांड के एग्जांपल्स है. रिसोर्ट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Price of the resort was kept 500 per person. 1,000 people visited that resort. 400 हो गया तो 1,200 people visited. तो यहाँ पे हम देखो कुछ अलग अलग एग्जांपल्स लेके देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड इज नॉट सेम. इन सब में आप देखना कि जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए, रिस्पॉन्स इज नॉट एट ऑल द सेम. डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग वेरिएबली. मतलब यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं दैट वी कैन नॉट एंटिसिपेट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द response of demand will be same every time. The response of demand will be changing, and based upon the response of demand, the elasticity of demand is divided into 5 types. ED is equal to infinite, which will be called perfectly elastic demand. Elasticity of demand is equal to 0, perfectly inelastic demand. Unitary elastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand. ये क्या होता है? Let us discuss them in details. Let us discuss them in details. Perfectly elastic demand. There will be slight change or no change in price. In fact, no change in price itself you consider. Price will not change, but the demand will change infinitely. Very big change. मतलब यहाँ पे डिमांड रेस्पॉन्स आपको चाहिए तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में ये लिख लो. राइट इट इन स्टेटमेंट फॉर्म. When demand responds infinitely, when demand responds infinitely at given market price. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, given market price is called perfectly elastic demand. डिमांड का रेस्पॉन्स यहाँ पे क्या रहेगा? इनफाइनाइट, और वी कैन से वेरी बिग. See, I am circulating this word, very big. At the given market price. मतलब सिंबॉलिकली अगर मैं आपको बताऊं, सपोज डिमांड इंक्रीजेस बाय 100%, डिमांड राइजेस
by 100%, but price does not change. Price will be same, no change in price. We know elasticity of demand is percentage change in demand upon percentage change in price. So 100 upon 0, which will be alpha, undefined infinite number. Any number cannot be divided by 0. It's undefined concept in maths. So that alpha sign represents undefined infinite number. Now let us see the diagrammatic presentation of perfectly elastic demand. Y-axis, as I said, is always price axis and x-axis pe quantity demanded. Now say when P was the price, Mn was the quantity demanded, OP was the quantity demanded, QR was the quantity demanded. मतलब आप ऑब्जर्व करो प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ता भी है कम भी होता है, सेम प्राइस, द डिमांड कैन राइज और डिमांड कैन फॉल. तो उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे एम ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड इट अप टू पी, वी गेट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. याद रखना, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मूविंग पैरेलल टू विच एक्सिस. चेक करो और बताओ, it moves parallel to which axis? X axis को वो parallel move करता है, indicating perfectly elastic demand. यहाँ पे ED is equal to infinite. Again I say horizontal straight line parallel to X axis. First type of price elasticity clear to all of you. चाहिए तो ये डायग्राम ड्रॉ करो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, बाद में ड्रॉ करना. Now we go to the second type of price elasticity, perfectly inelastic demand. ये perfectly elastic का एग्जैक्ट अपोजिट. यहाँ पे प्राइस अनलिमिटेड चेंज होगा बट डिमांड विल नॉट चेंज. प्राइस विल चेंज अनलिमिटेड, डिमांड विल नॉट चेंज. प्राइस बिग चेंज, डिमांड नो चेंज, जीरो चेंज. मतलब यहाँ पे डिमांड विल चेंज 0%, प्राइस में राइज और फॉल बाय 10%. We know ED is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. 0 upon 10. Any 0 divided by any number is 0. So answer would be 0. जब diagrammatically हम इसको बनाएंगे, we can see that OP was the price where we get DD as the demand curve. यहाँ पे जो है, see the red dot over there represents the quantity demanded. अभी प्राइस बढ़ा भी या प्राइस कम भी हो गया, डिमांड विल रिमेन द सेम. तो हमको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं. हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वी गेट वन डिमांड कर्व विच इज
a vertical straight line parallel to y-axis. Parallel to y-axis. Is that okay? Second type समझा सबको? Third type, unitary elastic demand. Unitary, unit, equal. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस एंड डिमांड का चेंज जो रहेगा वो सेम रहेगा. मतलब प्राइस अगर 10% से बढ़ गया तो डिमांड 10% से कम हो जाएगा. प्राइस 50% से कम हो गया, डिमांड 50% से बढ़ जाएगा. सपोज ये प्राइस राइजेस बाय 10%, price falls by 10%, demand rises by 10%. तो ED is equal to 1. इसमें हमेशा elasticity of demand will be always equal to 1, and therefore it is called unitary elastic. Are you understanding that? Diagrammatically, say when P was the price, Q was the quantity demanded. अभी प्राइस कम हो गया 10% से, P1, क्वांटिटी बढ़ गया 10% से Q1 पे. हमको 2 पॉइंट मिले, इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट. उनको जब हम ज्वाइन करेंगे, वी गेट वन डिमांड कर्व. डी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू 1. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू?